Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Anwar, and you're watching my channel, Mohammed Anwar, and Education for Us All. So, a quick plea before we start to please like, share the channel, and watch fully. Okay, welcome to another presentation in the recipe of the day. So, a very simple curry dish, something that we make quite regularly. It's lentil and chickpea curry. So we found this on the BBC website. We make it anyway, but this, as I keep reminding you, is formalized, as it were. It's got pictures, it's got the writing on it. So this is at the request of a number of friends. नाजरीन खुश आमदीद. मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर ऑल. एक बार फिर है जी रेसिपी ऑफ द डे. ये डिश है जो हम सभी बनाते होंगे. दाल और चना का सालन. ये है जी नंबर 53. ये कुछ मेरे इंग्लिश फ्रेंड्स हैं, उनकी फरमाइश पर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, वो ये पसंद करते हैं क्योंकि इसमें स्टेज बाय स्टेज लिखा हुआ है. ओके, लेट्स शो यू द इंग्रेडिएंट्स गाइस. सो नाज़रीन, ये चीज़ें ज़रूरत होंगी. इसमें हम बनस्पति चावल लिखा हुआ है कि ये स्टीम करके उसके साथ होंगे. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गॉट बनस्पति rice which is going to be steamed to eat with the curry, but of course we can eat it with the chapatis and naan, etc. So we need 300 grams of the banaspati rice, 2 tablespoons of vegetable oil, sabzi ka tel, 2 onions sliced, 2 mugs from frozen onions. अगर frozen है तो 2 mugs, और अगर खुद काटना है तो 2 प्याज होंगे जी, उन्हें स्लाइस करना है. 2 garlic cloves finely grated and crushed, or 2 tablespoon ready chopped garlic. अगर रेडीमेड आपके पास फ्रोज़न है तो वो उसके 2 चमचे हैं, तो अगर नहीं तो 2 गार्लिक के टुकड़े चाहिए और उन्हें ग्रेट करना है. 2 tablespoon of medium curry powder, 2 tablespoon curry powder नाजरीन. 400 grams of chopped tomatoes in a tin, 400 ग्राम वाला tin tomato. 400 ग्राम जी coconut milk. This is really is a what can we say, decider, as it were. Just 400 grams of coconut milk. That's a secret recipe to this. 400 gram tin green lentils, drained and rinsed. 400 gram ji sabaz dal. 400 grams again tins. These are tinned. We buy them fresh. Chickpeas, drained and raised. 400 gram ji um, chickpeas, chana. 240 grams of baby spinach leaves. 240 ग्राम हम साग भी डालेंगे. Again, that is a nice addition. 2 tablespoons of mango chutney, 1 lime and juice. Okay, so एक चिन्नू जो सब्ज होता है, as opposed to नींबू which is yellow. चिन्नू, yep. So एक पूरा उसका रस हम निकालेंगे. 2 tablespoons of roughly chopped coriander, और आखिर में 2 चमचे धनिया के. Okay, let's have a look at the method. Okay, so firstly bring a pan of water to the boil, add the rice, stir well and return to a simmer. Cook for 10 to 12 minutes until tender, then drain and return to the pan to steam. Okay जी, पहले हम ये पानी उबालेंगे, फिर जो चावल थे उसमें डालेंगे और खूब हिलाएंगे, तो इसे 12 से 15 मिनट तक हमने कुक करना है. Meanwhile, heat a large wide lidded pan until hot.
Add the oil and onions and stir well and cover and cook over a medium heat for 4 to 5 minutes, stirring occasionally until softened and just colored. ओके जी, अब हम एक बड़ा पैन जिसकी ढक्कन हो, उसमें उसको गर्म करना है। हम तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, तो इसे कुक करेंगे 5-6 मिनट, जब तक वो प्याज सब नरम हो और उसका रंग तब्दील होना शुरू हो। Okay, stir in the garlic and curry powder and cook for a minute. Then add the tomatoes, coconut milk, stir well, bring to boil. Stir in the lentils and the chickpeas and return to simmer. Cook for 10 minutes until slightly thickened. Okay, जी। फिर लिखा हुआ है जी, हमने लहसुन डालना है, करी पाउडर डालना है और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो फिर हम टमाटोज डालेंगे और कोकोनट मिल्क डालेंगे, नारियल का दूध। इसे खूब हिलाएंगे और उबाले तक पहुँचाएंगे। तो फिर हम डालेंगे जी दाल और चना। ओके, तो फिर इसे एक बार फिर उबलने देंगे, कुक होने देंगे। यहाँ 10 मिनट्स लिखे हुए हैं नाजरीन, आई थिंक सो 15 इज़ मोर रियलिस्टिक, खासकर अगर आप टिन का नहीं हो तो। Guys, I think the 10 minutes is okay for the tinned chickpeas and lentils, but if it's not, if it's one that you've soaked, then I think 15 minutes is the more realistic one. Stir in the sorry, so until slightly thickened. So इसे गाढ़ा होने देना है नाजरीन। Stir in the spinach leaves, mango chutney, lime zest, and juice with half the coriander and cook for another minute until the spinach wilts. Okay जी, अब इसमें हम साग के पत्ते डालने और मैंगो आम की चटनी डालनी है, चिन्नू या नींबू जो आपके पास हो उसका रस डालना है और आधा जो धनिया था वो भी डालना है। ओके, तो एंड फाइनली scatter the remaining coriander over the top to serve with the rice. Okay, so फिर हम गार्निश करेंगे धनिया के साथ। तो ये हम चावल के साथ खाएंगे। Okay, so it's up to you. Rice is obviously the best. Let's show you a picture. Now, before that, there is the Urdu, so I'll leave you to read that Urdu. If I read it, it'll take us quite a while and it'll take us over the 10 minutes, which I am comfortably going to achieve, hopefully. This is the picture. Okay, so as you can see, what can we say? The onions makes the difference, the spinach makes the difference, and most of all, it really is the zest. नजरीन ये जो नींबू या चिन्नू का रस है, इसके साथ इस डिश का बहुत ही लजीज जायका होता है। और इस साथ जो कोकोनट मिल्क है वो भी, क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है, तो फिर वो बहुत ही अच्छा लगता है। So I really like the coconut oil in this as well. That makes a difference. So as I say, I think it is best with rice, but you can. There's no reason why you shouldn't have it with chapatis and naans as well. So it really is a nice, quick recipe. I'm sure it is a vegan recipe. Okay, नाज़रीन, इसमें हो सकता है अगर आप एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी ना इस्तेमाल करें तो उसे वीगन कहा जाता है। Definitely vegetarian. Okay, that is it, guys. Just remains for me to say thank you for watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Until the next time, look after yourselves. लुक आफ्टर अदर्स, गुड बाय नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखना।
दूसरों का ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।